आपका और कॉफी का कुछ अलग ही रिश्ता है। मैं सुनता बहुत आया, बट मैं आप ही के वर्ड से जानना चाहता हूँ, ये रिश्ता कॉफी और आपका क्या कहलाता है? Only harvest and sells top 3% of world's top 3% of Arabica beans. So कैसे मीन्स आप सेकेंड ईयर बीटेक में भी है, so how did you manage it all, startup and your business? I think basically ever since childhood I had a very keen interest in startup, stock market, and I've been investing in stock market since I was 8th, 9th. Oh, that's great. I like my dad used to put up CNBC hours. I literally grew up watching CNBC hours. Stocks tick आज ये उन लोगों को मिस नहीं मिल पा रहा. Right, exactly ना, that's the matter. Like कि पहले कैसे होता था, as mentioned previously, कि इन्होंने भी mention किया कि कैसे होता डिग्री के ऊपर पहले होता था कि इसने ये डिग्री की है तो डन. सो जर्नी स्टोरी में हर्षल जुइकर एम प्रणव गुराव का स्वागत है. कैसे हैं आप दोनों? all good. प्रणव, I'm doing amazing, man. I could be better. Yeah. दैट्स फैंटास्टिक. सो मैं आपको क्या बुलाऊँ, आप दोनों को ब्रो बुलाओ, सर बुलाओ, क्या बुलाऊँ? Anything you wish, ऐसे कुछ नहीं है. It all depends on you, sir. बोला आपको bro बोला. तो ब्रो बुलाते हैं, ब्रो वाली फीलिंग, दैट्स अ ग्रेट, फैंटास्टिक. right. सो हर्षल, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ. सो आपने इतना सारा गूगल में किए. एक्चुअली 90s की मैं बात करूँ तो उस टाइम पे उतना हाइप नहीं था, कि लोग कहते थे कि जितना डिग्री रहेगा उतना ही पैकेज मिलता है. बट डेफिनेटली आज के मीन्स ड्यूरेशन में वो धीरे धीरे चला गया है. डिग्री डजेंट मैटर, इवन गूगल इज हायरिंग विदाउट डिग्री, यू नो अबाउट इट. एंड डेफिनेटली आपने तो उस हाइप को और भी कम कर दिए है. सो इसके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे आपको 50+ लाख का पैकेज मिला गूगल में विद जस्ट a BSc डिग्री? कैसे यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. ओके, सो अभी ईच एंड एवरी फील्ड का अलग अलग होता है. लाइक मीडिया का अलग होता है, देन लाइक BBA का अलग होता है, MBA का अलग होता है. ईच एंड एवरी फील्ड इज डिफरेंट, व्हाट आई बिलीव. सो उसमें कैसे होता है, इन टेक फील्ड कैसे होता है, टेक में इट इज़ ऑफ कोर्स एंड डिजिटल एज, डिजिटल एरा है, नई नई टेक्नोलॉजी आज आ रही है, कुछ टेक्नोलॉजी जा रही है, कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है. अभी पहले होते थे फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद उन्होंने रिप्लेस किया पेन ड्राइव्स, उसके बाद हार्ड डिस्क आ गए, उसके बाद SSD आ गए. सो ऐसे टेक्नोलॉजीज ग्रो होते हैं बेसिकली. सो इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड लाइक ऑफ एन टेक्नोलॉजिकल फील्ड, यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. कि अभी आज ये लैंग्वेज है, इसका मीनिंग ऐसे नहीं कि कल भी वही लैंग्वेज होगा. Okay, there are multiple things, there are multiple advances, which and like you know, nothing is permanent. Each and everything gets replaced someday or the other. So in this technological field, you need to be very consistent. Like if you're working on something, कि तुम भले तो वो चीज़ हर रोज आधा घंटा करो, but वो हर रोज करो. Consistency. Okay, consistency matters. Okay, once you're consistent enough, then you get to study that language, then you get to study that technology. Like कितने सारे technologies है. Okay. सो वो सब अभी डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाते हो. अभी पहले कैसे था, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही थी. उसके बाद उसका एक एक्सटेंशन आ गया कि ML मतलब मशीन लर्निंग आ गया, कि मशीन को कैसे हम एल्गोरिदम से वगैरह प्रोग्राम और कैलिब्रेट करते हैं. ओके, फिर उसके बाद कैसे था, सेंट्रलाइज सिस्टम्स था, लाइक सर्वर्स के ऊपर एक ही सिस्टम पे सारा डेटा वगैरह मिल जाता था. बट अभी कैसा है कि यू गेट एन डिसेंट्रलाइज सिस्टम. Web3 आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, वेयर इज ईच एंड एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड. नथिंग इज एट वन प्लेस, मेकिंग योर डेटा मोर सिक्योर. सो दैट इज एन स्टफ. Okay, Pranav, you want to add something on inconsistency, man? Yeah, I believe that discipline and consistency are building blocks to everything. I mean, if you don't have those applied with regular intensity, I don't think you can achieve or do anything any further in life with that. So I guess doing the same things when you don't feel like doing them, like like I have to code today 2 to 3 hours, let's say I have to go to the gym today, and pushing yourself to do that is the best thing you can ever do for yourself only. So that creates a mindset of unbreakable will, and once you have that unbreakable will, you will be very successful in life. Because you can see the competition is not much nowadays. Everyone you can see is like maybe probably distracted in their phones. Definitely. You might have seen. So I guess getting ahead in this world right now is not as hard as it used to be in like अपने dad की generation, because everyone in that generation was hustling. Everyone, college and all that. But nowadays people are mostly distracted only with their own internal affairs and all that politics. So this is the best time in in our history to get ahead of everyone else. This is what I think. So if you apply your discipline, apply your consistency, and be perspicacious about your environment and surroundings, now you'll go very ahead in life. Okay, so basically in summary, we can't get anything in comfort zone. Right. We have to push ourselves. I think that is why it's called comfort zone for a reason.
because you're only doing what you're comfortable with. If you're doing something that you're comfortable with, you'll never grow. If you want to grow as a whole, then you have to seek discomfort. Because adversity adds character. That character builds your mental fortitude. So For if sure. you do that now, it's gonna bring it like every single day. I don't feel like going to the gym, but I still go anyways. So That's great. Yeah. So हर्षल, आप कोडिंग कितना घंटा करते थे? मीन्स एवरी डे हाउ मच आवर्स यू कोड? ओके सो मेरा कैसा था लाइक 9th 10th से मैंने स्टार्ट किया. ओके Coding. बोर्ड हाँ प्रोग्रामिंग वगैरह लाइक नॉट मच इनटू इट बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी थे. आई हैड टू डील विद इट. सो 11 से एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंट चालू किया लाइक बेसिक्स HTML वगैरह वहाँ से स्टार्ट किया. एंड आई यूज्ड टू डू इट लाइक 3 hours वगैरह अ डे. And then I developed interest into it. Then I explored IoT, I explored servers. Then I went into the server. And like for me it was a piece of cake. Like once you start loving one specific thing, then आपको पता नहीं चलता कि 4 घंटे हो गए 5 घंटे हो गए. So yeah. So basically आप 4 to 5 hours per day कोडिंग करते थे? हाँ लाइक पर डे कोडिंग और आइदर डूइंग समथिंग एल्स लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना या फिर लैंग्वेज का जो बेस है वो सिंटैक्स है वो एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करना, दैट काइंड ऑफ स्टफ, और इन्वेंटिंग सम न्यू थिंग. ओके, सो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका ब्रदर लाइफ चेंजिंग पॉइंट था. या यू कैन से दैट डेफिनेटली. Yeah, I think अभी कोडिंग में कैसा है, like the languages that we used to learn, like पहले generation में थे PHP and all that. I won't say that irrelevant, but there are modifications to that language अभी. So like different new languages coming out, like Python तो हमेशा से था, Python, then Mojo, Astro, उसके बाद different libraries, different kinds of techniques, like there's a full new exploration area in blockchain also, like Solidity servers, Ethereum servers, Solana servers, तो work है. So if you want to really dive into that, there's a complete an array and sets of projects too you can apply to your resume to get ahead in life. That's what I think. ओके, सो प्रणव, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ ग्रेविट इंडिया आप co-founder है कंपनी की ग्रेविट इंडिया के. सो हाउ डिड यू मैनेज इट ऑल, स्टार्टअप एंड योर I think बिजनेस? basically ever since childhood I had a very keen interest in startup, stock market, and I've been investing in stock market since I was 8th, 9th. I used to put up CNBC hours. I literally grew up watching CNBC hours. Stocks, tick, aaj ye bada. So like I had a very fascinating interest in that. So like it's a culture basically. So you go into that and you like something you stumble upon some as a new genre of entire startup stuff, like Wolf of the Wall Street, like different ads, shows, apps, and all that. So this creates a development. This creates a thought process in your mind. Ki shit, I mean, like if you really want to be influential in this world, then you have to do something out of the box. You have to do something that's extraordinary. You can't just follow the 9 to 5 pathway. Yeah, that definitely. has been laid upon us, by the way. So there is nothing wrong with 9 to 5. I'm not blaming that, but it's completely good, and I think it's better for some people to have a 9 to 5 job. But if you want to go the entrepreneur's path, you have to face a lot of difficulties, a lot of setbacks, failures. People saying no, people not showing up. Co-founders saying no, like employees not showing up. So that is a completely different thing. But if you're prepared to walk that path of life now, you're prepared to go through that suffering and trial and error, and I think you can create something that represents you, and that is the most beautiful feeling in the world. सो हर्षल, जैसे प्रणव ने कहा कि 9 to 5 वर्क वो है, सो आप क्या इस पे कुछ कहना चाहते हैं? बिकॉज आई थिंक आप भी एक टाइम पे मीन्स 9 to 5 ही करेंगे, बट डिड यू प्लान फॉर फ्यूचर स्टार्टअप? Right, so the place where I work, okay, that is not a kind of place where you have to be 9 to 5 job. Completely agreed. That's the place of Google workplace. Being very honest, no offense, so that these are not Indian companies or any other companies. Definitely. जो बोला कि चलो ये काम तुम्हारा 8 काम खत्म हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास और टाइम है तो ये भी कर लो. So that is not the case here. आप अपने कंपनी में ये कल्चर रखना चाहेंगे ग्रेविट इंडिया में? I mean, that's the thing. Like, it shouldn't feel like a company. It should feel like a job. Because if you feel like a company, लोगों की creativity निकलती नहीं है, So like if you see Meta के starting stages में, Mark Zuckerberg also did this, implemented the same thing only, कि like don't look at it as a company, look at it as a workhouse. I mean, like आ जाओ इधर code करो, have fun, have a chill time. When the Facebook first started, they rented a house in San Francisco, California. So that they like every day they had a party. They were chilling in the pool. They were drinking beer shots वगैरह. So it felt like a fraternity. More than a company, and that is what a company should be like. Nowadays, all this work culture has overloaded your brain, pressure बहुत आता है. But like that isn't the ideal way to go about it. I mean, it gets your job done. I completely agree, but that does not leave room for imagination and creativity. मेरे को तो वही लगता है. So you should be as creative, as open, and as chill as possible, because these things they create barriers and pressures inside your mind.
So are you implementing this culture in your Rabbit India? So I just tell my people कि like task कर लो उसके बाद आ जाओ उसके बाद if it's complete just send me a confirmation mail, a confirmation text, and it happens on its own. So basically. That's completely great. So Harshal, मुझे ये जानना है आपसे, मीन्स 51 lakhs पैकेज आपको मिला गूगल से. सो अराउंड एवरी ईयर लैक्स में ग्रेजुएट्स होते हैं इन इंडिया फ्रॉम बीटेक एंड बीएससी एंड बीसीए. एंड बीएससी को हैज़ कम्पेयर टू बीटेक की ज़्यादा ही रेपुटेटिव वैल्यू है हैज़ कम्पेयर टू बीएससी. सो आप में ऐसे क्या अलग किए कि आपको मीन्स बीएससी डिग्री से इतना पैकेज मिल गया जो बीटेक करने के बाद भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा? राइट एग्जैक्टली ना, दैट इज़ द मैटर. लाइक कि पहले कैसे होता था, एज मेंशन्ड प्रीवियसली कि इन्होंने भी मेंशन किया कि कैसे होता है डिग्री के ऊपर पहले होता था कि इसने ये डिग्री की है तो ले लो. यू नो देयर वाज अ मिथ, लाइक जब मैं 10th में वगैरह था ना, देयर वाज अ मिथ कि MSCIT कर लो जॉब कंफर्म मिल जाएगी. लाइक MSCIT वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज उस वक्त कैसे था, लोगों के पास कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे. अभी तो हर एक के पास कंप्यूटर्स है, हर एक के पास फोन्स है. सो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है. लाइक MSCIT क्या सिखाता है आपको? बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट, बेसिक्स ऑफ एक्सेल, बेसिक ऑफ वर्ड, देन आउटलुक वगैरह कैसे चलाना, दैट्स इट. सो अभी पहले का एरा इफ यू हैव कंपेयर्ड कि कुछ लाइक ऑफ कोर्स इट्स एन ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स एन सोसाइटी, इट इज रन बाय ह्यूमन. सो वेयर एज वी हैव ओल्ड स्कूल मेंटालिटी एंड ओल्ड स्कूल जनरेशन की वो बोलती है कि डिग्री कर लो फिर जॉब पक्की है वगैरह. वो अभी करंटली ऐसे नहीं है. अभी डिग्री के बाद कैसे होता है, यू नीड टू डेवलप योर स्किल्स. अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो क्या ही फायदा. Now, whereas somewhere I believe that the education system is to blamed as well because like most of the time हम theoretically पढ़ते हैं. Like I'm not saying that there is anything wrong in learning theoretically, but तुम theoretical भी पढ़ो but उतना practical भी पढ़ाओ. अभी हमारे labs वगैरह है but we all know कि कितने lab में क्या पढ़ाते हैं. Like if you are theoretically learning कि how to build a smart contract, but you are not learning that the same in lab कि इतना smart contract बनाओ, इतना ये करो वो करो. Then you have to reroute that address, wallet address वगैरह वो सब. So it's a big thing that I believe, being very honest, that education systems should be improvised. Improvised in the sense of? In the sense of practical knowledge. Like हमारे पास लैब होते हैं but हम सबको मालूम है कि लैब को कितने मार्क्स है और रिटर्न पेपर को कितने मार्क्स है. That's the point. That's a big deal. And the thing is like I am a computer science student. Okay, world has modernized. Okay, मैं लिख के क्या करूँ? Like I am writing my code, an entire code कि asterisk symbol print कैसे करना है on a paper. That's not a logic actually. Like this is somewhat I feel that this education system is limiting the thinking process of our respective child. So means you are completely against of education system? Yeah, I believe it should be improvised basically. Pranav, your views about education system? To a certain point, मालूम है क्या कि like the education system tries to reframe something that is not as useful in the current world. मतलब I mean like no one's going to teach you how to do your taxes, you know, how to actually get a job. Relevant skills सिखाते नहीं. I just heard कि like I guess first year में assembly सिखा रहे हैं. I mean I just room. That's true. Wow. So assembly is a really out of date language that has no practical applications in the world in 2024. That is what I think though. I mean like yes, education I think is important. Maybe 10th तक तो I guess history geography का होना चाहिए. मतलब yeah, that's enough. But I guess they give you a certain rules, they give you a certain page to follow that is irrelevant in the world because अभी लगता है to survive and all. So definitely education system to definitely change. एक्चुअली आपका और कॉफ़ी का कुछ अलग ही रिश्ता है. मैं सुनता बहुत आया हूँ बट मैं आप ही के वर्ड से जानना चाहता हूँ ये रिश्ता कॉफ़ी और आपका क्या कहलाता है? Okay, so like for me, coffee is something, you know, each and every programmer, each and every tech related guy out there can relate his life to coffee. Like what we tech guys do, हम mostly रात को काम करते हैं. Okay, it's like after 11:30 वगैरह. With you. Okay, and we need something that can hit our mind in order to process it. Okay, because code होता है, एक bug है. Okay, like let's assume कि line 750 पे bug है, पर code 250 lines का ही है. That's the point. फिर वो समझ नहीं आ रहा कैसे solve करें. So उसके लिए समझने के लिए we need something hit. So of course we don't consume alcohol; it gives us diseases and stuff. So we don't want that. So what can it replace? So it's caffeine. Okay. So if you have quality caffeine,
then you get that hit कि like brain basically higher orbit पे काम करना शुरू करता है. So I always used to consume coffee, but वो कैसे होता है like उसके बाद मुझे थोड़े side effects वगैरह लगने लगे कॉफ़ी के. Like if you consume too much of caffeine, then वो जो sleep enzymes वगैरह जो हमारे brain में वो ज़्यादा इंजेक्ट करने लगते हैं, जिससे हमको और भी नींद आती है. So it was affecting my health. So I did a research कि कॉफ़ी पीना है but उसके side effects से बचना है. So क्या ही कर सकते हैं. Then I came to know कि there are two types of coffee beans. One is Robusta coffee bean and one is Arabica coffee bean. So I was very curious into it. कि क्या है. Then मैंने पूछा कि कॉफ़ी का स्टडी कहाँ से करें. Then I found a place called as Starbucks. Oh, that's great. Then I like if you observe they have a very good hospitality वगैरह and I made some new friends over there. Then they taught me कि ऐसे कॉफ़ी है. I was very fascinated कि ये लोग क्या करते हैं, like इतनी महंगी कॉफ़ी ये सेल कैसे कर पाते हैं, and ये first of all ये कॉफ़ी यहाँ पे इतनी महंगी क्यों मिलती है. Then I came to realization that Starbucks only harvest and sells world's top 3% of Arabica beans. Okay. And that's a great knowledge. Yeah, and cultivating Arabica coffee beans is very hard because वो एक तो higher altitude पे होते हैं, like जो growth होती है उनकी वो mountain के top के ऊपर होती है. And if you are on the top of mountain ना, then you are affected by all the factors. Like धूप सबसे ज़्यादा लगती है, ठंड सबसे ज़्यादा लगती है, then weather का जो कुछ भी effect होता है वो सबसे पहले वहाँ hit करता है because you are higher on altitude. So it's very difficult to cultivate. Henceforth वहाँ पे बहुत it's very getting it. Coffee. So then I developed my taste. Then वहाँ पे ना in Starbucks you have coffee tasting sessions. Okay. Where you test coffee. Okay, multiple coffee होती है, हर एक type की coffee होती है, like comparative testing, French press, Chemex, siphon and many more like. Okay. So मैं इतनी बार coffee tasting कर चुका हूँ कि in order to know coffee मैं इतनी बार coffee taste कर सकता हूँ किया है कि मैं बस aroma लेके बोलता था कि ये coffee अच्छे से brew हुई है या नहीं. Oh my God. Recently I have gone to DMart recently. In the shelf of around DMart में shelf होते हैं ना, kitchen shelves. So मैं kitchen shelves में गया था ऐसी randomly. So basically वहाँ पे एक कप था, वहाँ पे लिखा था कॉफी इज बेस्ट फॉर प्रोडक्टिविटी. राइट. डू यू एग्री? नीचे सबटाइटल में लिखा था. तो मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही है, डू यू एग्री विद इट? लाइक डिपेंड करता है, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है. किसी को चाय लगती है किक के लिए, किसी को कॉफी लगती है. बट फॉर मी आई बिलीव इट्स कॉफी. फॉर यू इट माइट बी समथिंग एल्स. It might be something else. So it actually depends upon the person. So each and everyone has their own cup. You just have to go and you have to find your own cup कि आपको कैसी कॉफी पसंद है. ओके. सो प्रणव, आप जब वर्क ऑन कर लेते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी के लिए क्या यूज करते हैं? Absolutely agree with Harshal यहाँ पे कि like caffeine is a miracle drug. I mean like the things it can do, I can use it. So I want to ask you another question. What's your go-to coffee, Harshal? If I wanted on the go coffee, then I get an espresso frappuccino with 4 extra shots of caffeine. 4 extra shots. Oh of my caffeine. God. Wow. Arun, what's your go-to coffee cup? It's a tea. Actually, I prefer tea because. Tea person, yes, exactly. Right. But yeah, I absolutely agree. Caffeine is a miracle drug. Coffee, pure rose, at least I drink at least 2 to 3 cups a day. Like you need that. Right. Yeah, exactly. Which one do you prefer? I like Nescafe वगैरह. Nescafe. Yeah, Nescafe is better. Yeah, I mean मेरे को ऐसा लगता है. It's a good brand. It's a good So like what Starbucks did, like they are very smart. Like once the 3 founders of Starbucks, उन्होंने once they went to Italy and France में कैसे coffee shops और cafes बहुत famous है. Okay, because of course France में भी French Revolution cafes played a very vital role in the revolutionary movement. So they were very confused कि हम यहाँ पे coffee हमारी सेल कैसे करें. ओके. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कॉफी सेल कर रहे हैं, वो बोला कि हम कॉफी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. जस्ट दे चेंज द टैगलाइन. दैट्स अ साइकोलॉजी. या दे जस्ट चेंज द टैगलाइन एंड पीपल वर क्यूरियस अबाउट इट. सो उसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ गए फ्रांस एंड इटली में वगैरह. नाउ देयर इज एन लाइव एग्जांपल. इफ यू चेक पेपर बोट, उन्होंने भी वही किया. उन्होंने लाइक उनको फिक्स था कि दे वांटेड टू बिकम इन दिस जूस एंड लिक्विड ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स का स्टफ. एंड बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है, रियल फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दे आर बी लाइक कि इससे ना कुछ तो अलग चाहिए. इफ यू आई वांट टू स्टैंड इन मार्केट देन वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने ना अपने जो फ्लेवर्स है उनका नाम ऐसे ओल्ड स्कूल रखा.
then amras वगैरह like ऐसे बोलते हैं कि like देखो ना like mango juice इससे better amras आमरस so they played with the name, exactly और उन्होंने ना बचपन की यादें trigger की like going to school even if you check their Instagram page paperboat का official paperboat का Instagram page they still have this कि school में जाना है and stuff होली के दिन ये है. So that is the thing, na, where you generate the emotionality of people, and then people come to you. Actually, paperboat played with two things. One, there with the design. If you see, there is another design apart from all these things for standing out. Right. So that's completely great. Okay, as an entrepreneur, आप क्या कहना चाहेंगे? I would like to say कि it's about the entrepreneurship basically. So like it's about you. I mean, like I haven't said not to be a narcissist, but the thing is कि you have to develop yourself to increase your company. मतलब, you know. And the thing is, most startups you see today in Indian culture market, they don't solve a problem necessarily. Like the majority of the problems that you solve become great startups. So if you can see like great startups, you know, what are they doing? They're solving a problem. Industry में एक problem था, we're the only ones to solve it, and that is why we're a $1 billion industry. That is what I think. So if you have a core problem and you solve that problem, I think that's you can scale your startup to a great level. So मेरे को लगता है one take अच्छा हुआ. Best हुआ. मेरे को लगा नहीं cut चाहिए था. You have to be very accurate. For the first few people determine your company क्या है exactly. You can't just hire. You can just take care and recruit anyone just because you know they are your friend. Yeah, it's gonna be you're gonna result in something good. So Harshal, आपकी story. And then the rest is history. So she took it very personal. Like we did it for fun, but she took it very personal. It was like there was a senior person. I was in my. I believe in politics you need to play very safe. You need, but दोनों की fight होगी. ये 5 लोग जीत गए. So next इसमें भी same team. But it doesn't matter कि यही 5 लोग जीतेंगे. That it is so वो कि अभी I have currently 9,500 hours अभी.